Squash. You will get a recording, by the way, on your WhatsApp group, respective WhatsApp groups. So Yellow Squash is a platform. We are trying to aggregate solution for different kinds of chronic conditions such as diabetes, type 1, infertility, autism, PCOS, several hormonal imbalances, thyroid, and so on. So what we are trying to achieve here primarily is a situation wherein there are, the go-to solution for us always is something like traditional medicine, which is allopathic. Now traditional medicine is allopathic. सो एलोपैथी में जिन चीजों के सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, क्रॉनिक कंडीशंस, उन क्रॉनिक कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए वी आर वर्किंग विद द बेस्ट एक्सपर्ट्स इन द कंट्री who have wherein we have a high degree of faith in the modality and the expert and the methodology which can help you find the cure towards your chronic conditions. So we have a 16-point check to ensure that you are working with the right environment. Second thing we do is that we have these information sessions through webinars, through phone calls, through WhatsApp, and several other methodology and content and whatnot. We help you get informed before you are and educate you to the best of our ability before you join any of the programs, so that you are very well aware of what you are getting into. The third thing that we do is that whilst you are in the program, you have any kind of a challenges, you can always reach back to us. So we ensure that you have a beautiful experience during the program that you join in. So all of these different things is what we do, and we help design the program in such a manner, most importantly, जो अभी current context में, in the COVID situation and all, you can enjoy and you can fully benefit while sitting at home. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. एंड में बहुत लोग सवाल पूछने वाले हैं कि ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ऑफिस का है, ये कहाँ है, वो कहाँ है. None of that is required. Everything would be given to you, provided to you while you're sitting at home. So with this said, I would like to explain a little bit about Dr. Preeti Nanda. So Dr. Preeti Nanda is one of the pioneers of functional medicine in the country. So she has done sizable amount of work. She's based out of Gurgaon. A lot of you are going to ask that question. She's based out of Gurgaon. She has worked with more than 3,000 patients. She has done so many things. She has worked in the dietary environment, cycling. She has written many books. She's an MBBS doctor. There's so many things she has done. She is working specifically into autoimmune conditions, gut imbalances, and most importantly, diabetes, and especially type 1 diabetes. There are very few people who are working specifically in type 1 diabetes, and we are very proud to represent Dr. Preeti here and this beautiful program. So just one thing which would be striking your mind, फंक्शनल मेडिसिन जो शब्द आता है, उस शब्द के बारे में हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. फंक्शनल मेडिसिन इज अ वेस्टर्नाइज्ड अप्रोच. नाउ फंक्शनल मेडिसिन में वी आर ट्राइंग टू मैरी बोथ द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. जो अच्छा है हमारी ईस्टर्न फिलॉसफीज में वो ये है, वी make our body able or capable to come out of different kinds of diseases and conditions. And the good thing about the Western philosophy or the Western world is that we work on proof. We work on some kind of a documented evidence. So this entire philosophy is developed in the West. Education, training, etc. for functional medicines happens in the West. वो Western philosophy में प्रमाण और प्रूफ के ऊपर काम करते हैं, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं. And there are so many things that people do, experts do. Primarily, people who are practicing functional medicine doctors are MBBSs. So that is what Dr. Preeti's background also is. And we have worked with Dr. Preeti in several programs in the past as well, with beautiful experience. So especially with autoimmune conditions like type 1 diabetes. So without further ado, I would like to welcome Dr. Preeti, and maybe we can start with some of the things that people have shared with us as well. And ma'am, you are there? Yes. All right, ma'am. So I'll just shut up and I'll provide the. No. Yeah. I think you do a great job, Ayush, of setting the context in, because that is very important. Unless we really are ready to receive information, no amount of information can help. So thank you, Ayush, for this great opportunity. And good evening, everybody.
So am I audible? If I am audible, please give me a yes in the chat box. Perfect. Thank you. Can I make one request? So not many people are ready to hear my request. No, now I have a lot of yes for the request. I sincerely want all of you to, to switch on your videos. And it is not for my benefit. It is for your benefit. You know why? जब तक हम अपने पांचों सेंसेस को नहीं यूज करते हैं, हमको बात समझ में नहीं आती है. राइट? एंड इट हैज नाउ बीन शोन, प्रोवन, और हम सब जानते हैं कि जब हम अपने वीडियोस ऑन करके बैठते हैं तो हमारे पांचों जो सेंसेस हैं वो ज्यादा लाइवली रहते हैं. सो अगर कोई भी है यहां पर जो इस चीज से डिसएग्री करता है, वो प्लीज मुझे यस चैट बॉक्स में दे. एनीबडी हु डिसएग्रीज दैट no, even if my video is off, I am 100% attentive. I am sure nobody will say this, right? So my request to all of you is, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा नया है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है फॉर द राइट टाइप ऑफ पीपल जो इससे जूझ रहे हैं, and because this topic needs little more attention than what other diseases like obesity or type 2 diabetes would need, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगले 40-45 मिनट्स जो भी टाइम हम यहां पर हैं, प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन एंड बी वेरी वेरी अटेंटिव. आई विल ऑल्सो एंजॉय इट मोर इफ यू आस्क मी क्वेश्चंस, राइट? सो yes, I will share my screen so that we can start with, okay. So let's first understand what is diabetes. Anybody who would want to give me in the chat box, what is diabetes? Okay, so we all know that basically we have pancreas in our body. Now these pancreas have alpha cells and have beta cells. The alpha cells produce glucagon and beta cells produce insulin. And when the beta cells function is compromised, या जब beta cells ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, तब डायबिटीज होता है, राइट? सबसे पहले जब डायबिटीज पता चला हमें, तो जनरली दो तरह का डायबिटीज हम बोलते थे, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज. टाइप 2 डायबिटीज वो होता है जिसमें कि इंसुलिन ज्यादा रिलीज होती है टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, which we call insulin resistance. Now type 1 diabetes is a type of diabetes where the beta cells, they are destroyed, and because these beta cells are destroyed, क्योंकि ये जो beta cells होते हैं ये खराब हो जाते हैं या मर जाते हैं, ठीक है, हमारे पैनक्रियाज में से इंसुलिन रिलीज नहीं होता है. And now when the beta cells are not there, insulin is not released, all type 1 patients are forced to take insulin shots. Yes? So please keep listening to whatever I'm saying, and I will take your questions in the end. So you can keep writing your questions. So we have type 2 diabetes, which happens in older age.
which generally happens in obese patients. There are very few thin type 2 diabetics. There is insulin resistance in those patients. Glucose metabolism is compromised, right? In gestational diabetes, which happens in pregnancy, glucose intolerance develops during pregnancy, and that is called gestational diabetes. Now let's come to type 1 diabetes, जिसके लिए आज हम यहाँ पर we are all here. Type 1 diabetes में there is not only one problem which is of insulin. So basically type 1 में multifaceted problems होती हैं. सबसे पहले of course इंसुलिन नहीं बना पा रही है हमारी बॉडी, इसलिए ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है. अब because the glucose is not able to enter the cells, where does glucose remain? It remains in the blood, and therefore the sugar levels increase dramatically. I have seen type 1 patients whose sugar levels had gone to more than 500, even to 650 when they first diagnosed their child with type 1 diabetes. Right? Ab insulin receptors don't work well in these patients. Genetics is one key reason in type 1 diabetes. So there are almost 11 genes which have been found to indicate whether there are chances of type 1 diabetes or not. और मैं ये नहीं कह रही हूं कि जेनेटिक्स अगर तुम्हारी जीन्स ऐसी हैं तो टाइप 1 जरूर हो जाएगा ना. दैट इज वन पार्ट ऑफ द 4-5 पार्ट्स. और अगर वो चारों पांचों प्रॉब्लम्स हो आप में तो चांसेस दैट यू हैव टाइप 1 डायबिटीज आर हाई. ऑफ कोर्स जब जेनेटिक्स होते हैं एंड आपके पैंक्रियाटिक सेल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, इन दो सिचुएशन के बाद भी आपको टाइप 1 नहीं होता. But what happens in the third stage? There is some viral infection, some viral gut infection with which you are affected. अब ये जो viral infection है, it triggers mitochondrial mutations. And mitochondrial क्या है? हमारी body का engine है, right? So mitochondria is the engine of our body, of our cells, which gives us all the energy. And after this, type 1 diabetes symptoms start happening and the patient starts to lose weight, starts to lose energy, feels tired. And suddenly one fine day, parents think that, oh, my child has lost so much of weight, he's always tired, he's not able to perform, he's not able to play. And when they go to the doctor, the child's sugar levels are found high. So before I go forward, I want to ask you guys, are you insulin dependent? Any one of you who thinks that they are insulin dependent? Please give me a yes in the chat box if you know that you are insulin dependent. Thank you for answering and thank you for showing that you are attentive. So there are these types of diabetes where you need insulin. Type 1, idiopathic and autoimmune, majority cases it is autoimmune. LADA, which is 1.5, which grows like type 2, slowly and steadily, धीरे धीरे, हौले हौले से. But it has an autoimmune component to it. MODY. Now MODY is maturity onset diabetes, but this has a big genetic element. If somebody in your family has MODY, 50% chances that your children will have MODY are there. That's how important role genetics play in MODY. And of course, in type 2 diabetes, some patients need insulin. And post-COVID, number of these type 2 diabetics who need insulin have increased. Because
coronavirus has been found to actually impact our gut, our pancreas, and other organs quite significantly. I'm sure, a lot of my patients of type 1 diabetes ask me about C-peptide. What is the level we should have? So basically, anything more than 1 nanogram per ml means you are still making insulin. And the chances that, you can get off insulin are very, very high. People who are making less than this, we will have to find out the cause and see how much improvement can happen. So before we have a look at what happens in type 1 diabetes, if you have any questions, I will wait here for 2 minutes and answer those. Jivansu, Tetra packed milk can and cannot cause. As I told you, एक चीज नहीं है जो ये cause करती है. There are multiple things. So the way I look at it is, अगर जब आपको आग लगानी होती है, what all do you need? You need wood. You have to put ghee or oil on it, right? अगर ये दो चीजें पड़ी हुई हैं तो क्या आग लग जाएगी? नहीं लगेगी, जब तक कि वहां माचिस से आप आग लगाओगे नहीं, right? So that is exceptionally important for you to understand. Ab, can I stop insulin? Of course, we are here to try to help you stop insulin, right? Every patient is different and हर patient में कितना बीटा सेल्स डेड हो चुके हैं एंड क्या रीजन है कि टाइप 1 डायबिटीज हुआ, वी हैव टू फाइंड दैट आउट. But what I can share here is, I can share a case study of my patient. I won't disclose the name, right? So I had this child who was 8 years old and her mom approached me and said, my daughter has lost a lot of weight, and after many months, last month we went to an endocrinologist and she has been put on insulin 16 units. I said, fine, how can I help you? She said, I am looking at an option of, functional medicine approach to help my child. Please guide me. I've already gone gluten-free, dairy-free for my child. I said, fine, let's look at the cause. So we tested some heavy metals which came positive. We checked with history on gut health because, gut health plays a huge role in type 1 diabetes. We changed their diet. We added exercise routine. And you know what? For last 6 months now, the child is off insulin. Right? I had another patient, an adult, 37 years old. He was on 68 units of insulin. And by the time he ended my 3 months program, his insulin levels had come to 12 units daily. Now that's a huge change. Why? Because the more insulin you take, the more side effects you can expect. Right? And I will now take few more slides and you will get to know more about what you are asking us. And then I will take second round of questions, right? So type 1 diabetes में होता क्या है? Type 1 diabetes में how many of you understand immune system? COVID के बाद तो सब समझते हैं, but if you understand what is your immune system, please give me a in chat box. A, capital A in the chat box.
Perfect. And what happens when your immune system starts working against you? क्या होता है तब? ऑटोइम्यून, टाइप 1 डायबिटीज. बट ये होता कैसे है? ये होता ऐसे है कि एक तो जेनेटिक्स होते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होते, बट ट्रिगर कैसे होता है ये? देयर इज सम इन्फेक्शन इन आवर गट और सम एलर्जीज जिसकी वजह से हमको लीकी गट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में कुछ ऐसी चीजें निकल के जाती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या लगता है कि बाहर से कुछ आ गया है जो हमें अटैक कर रहा है. अब जैसे आपको अचानक से कोई ऐसे दिखेगा कि आपको मार रहा है, तो आप क्या करोगे? यू विल बाउंस बैक एंड यू विल ईदर हिट दैट पर्सन और यू विल सेव एंड रन, है ना? तो हमारा इम्यून सिस्टम बाउंस बैक कर देता है एंड ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाती है. अब द चैलेंज इज इट डजंट स्टॉप हियर. जब तक आप ऑटो इम्यूनिटी को रोकते नहीं हो, टिल देन द कंडीशन कीप्स ऑन गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, राइट? And you will see more about it in the coming slides. But जब पैनक्रियास डेड हो जाते हैं, इंसुलिन नहीं बनता है, तो ग्लूकोज लेवल्स हमारे बहुत हाई हो जाते हैं. सेकेंड साइड पे ऑटो इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है. अब अभी तक आप जो भी कर रहे हैं, आप ग्लूकोज लेवल्स को तो कंट्रोल कर रहे हैं इंसुलिन से. How many of you are working on the autoimmune side of type 1 diabetes? Yes, अगर आप autoimmunity पर भी काम कर रहे हैं, प्लीज आप मुझे why chat box में लिख के भेजो. Why? If you are working on your sugar levels, we know. पर क्या आप अपनी autoimmunity पे काम कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो मुझे why, single Y, capital Y लिख के भेजो. So Chetan is working on autoimmunity, very good. Harika is working on autoimmunity, very good. Perfect. Because unless you work on the autoimmune side of type 1 diabetes, things will not improve. In fact, चीजें बिगड़ेंगी. क्योंकि जब autoimmunity में हमको एक डिजीज होती है, तो हमको और डिजीजेस होती रहती हैं. Generally we have seen that type 1 diabetic patients over few years in their life either have celiac disease or Hashimoto's thyroiditis or irritable bowel syndrome, because all of these are autoimmune disorders, and autoimmunity disorders keep adding up every 4-5 years, right? Thank you for your participation, friends. So this is what happens, and this whole thing leads to glycogen and protein breakdown, which results in ketoacidosis. This means क्योंकि इंसुलिन सेल्स के अंदर नहीं घुस पाता है ना, एंड सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो फैट मेटाबोलाइज होने लगता है लिवर में. अब जब लिवर में फैट मेटाबोलाइज होता है तो व्हाट हैपेंस? कीटोन्स आर मेड. ये कीटोन्स जब एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कीटोएसिडोसिस हो जाता है, विच कैन फर्दर लीड टू किडनी डैमेज, कोमा एंड डेथ. एंड इसीलिए कीटोएसिडोसिस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें टाइप 1 डायबिटिक्स में. Now let's understand this a little better. Genetics. The carrier can be your father or your mother, right? With mutated genes, almost 50%. So I would say this even becomes more than that. There was data which said 1 in 300 people, if have type 1 diabetes, right? इनकी फैमिलीज में अगर किसी और को टाइप 1 डायबिटीज है तो चांस कितना हो जाता है? 1 in 300 से लेकर 1 in 20. अगर किसी को फैमिली में नहीं है तो चांस है 1 in 300 को होगा. तो अगर किसी को फैमिली में है
तो चांस है कि 1 in 20 को हो जाएगा। पर प्लीज रिमेंबर, इसकी ये सिग्निफिकेंस नहीं है दैट यू गेट स्कैर्ड ऑफ योर जेनेटिक्स। इसकी सिग्निफिकेंस ये है दैट इफ समबडी इन योर फैमिली हैज टाइप 1 डायबिटीज, you get others also tested on time. Why? Because अगर आप टाइमली चेक करा लोगे तो कम बीटा सेल्स मर गए होंगे, and if less beta cells are dead, the chances that you will get off insulin increase drastically. But otherwise, as I told you, सिर्फ जेनेटिक्स हैं पर आपका लाइफस्टाइल ठीक है, आपको इन्फेक्शंस नहीं हुए हैं, तो फायर नहीं लगने वाली है। राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसा सोचते हैं कि यार जेनेटिक्स से इसलिए तो होना ही था ना, इसलिए नहीं होना था, और भी कुछ कुछ हुआ है, हमें लकड़ी चाहिए, हमें घी चाहिए और हमें आग भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द अदर रीजंस। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें होता कैसे है, ऑटो इम्यूनिटी शुरू होती है स्टेज 1 पे। ऑटो इम्यूनिटी के होने से बीटा सेल्स डेड हो जाते हैं। बीटा सेल्स डेड होते हैं जब, तो बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाती। क्योंकि बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाती तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता। नाउ because glucose is not able to enter the cells, the glucose levels in the blood rise, skyrocket हो जाती हैं, वो 500, 600, 700 तक बढ़ जाती है। फैट मेटाबोलाइज होने लगता है लिवर में, उससे कीटोन से बॉडी को एनर्जी मिलने लगती है, पेशेंट वेट लूज करने लगता है, पेशेंट को बहुत प्यास लगने लगती है, पेशेंट को बहुत भूख लगने लगती है, खूब खाना खाता है पर वेट लूज होता जाता है। राइट? तो ये सिम्टम्स आने लगते हैं। थोड़ी देर सिम्टम्स आके ना कई बार रिवर्स हो जाते हैं, वी कॉल दिस हनीमून पीरियड, एंड फिर दोबारा आते हैं एस्टैब्लिश डिजीज के साथ, एंड फिर अगर हम नहीं इसको मैनेज कर पाते हैं, then what happens? Complications start to happen. So this is how the disease progresses. The earlier in this disease progression we start our holistic treatment. ऑटोइम्यूनिटी से शुरू हुई है, तो जितनी जल्दी हम ऑटोइम्यूनिटी पे काम करना शुरू कर लेते हैं उतना जल्दी हम इसको रेक्टिफाई कर पाते हैं, इसको ठीक कर पाते हैं। राइट? So as I shared with you, symptoms क्या हैं? बहुत थकावट रहेगी, हमेशा प्यास लगी रहेगी, बार बार ड्राई माउथ होगा, वेट लॉस होगा। एक ना यहाँ पे व्हेन वी टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराते हैं ना जब मैं टाइप 1 डायबिटीज का, तो एक जो कॉमन चीज मुझे हीमोग्राम देखकर दिखती है ना, इज डिहाइड्रेशन इन दीज चिल्ड्रन। बहुत प्यास लग रही है, ड्राई माउथ है, राइट? ये तो सिम्टम्स है। इवन ब्लड टेस्ट में भी हमको डिहाइड्रेशन दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि इन पेशेंट्स में ना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारे? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड बैलेंस में होने चाहिए बॉडी में, है ना? जब वो इम्बैलेंस में आ जाते हैं तब डिहाइड्रेशन हो जाती है, एंड 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। राइट? सो all this needs to be corrected for us to get off insulin. So generally अगर हम we see life of a type 1 diabetic revolves around injections, sugar testing, medicines and very very limited options of food. Right? And what are the challenges they have? Abnormal liver, lifelong medicine dependency, poor heart health, kidney damage, diet and lifestyle restrictions forever, and poor fitness. Right? And अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ इन चैलेंजेस से ना गुजरे, right? So
वी हैव टू मेक एन एफर्ट नाउ, है ना. एंड ये एफर्ट फ्रेंड्स थोड़ा नहीं होता, काफी एफर्ट लगता है, बट दिस एफर्ट इज वर्थ वाइल. इट इज लाइक you cannot deliver a baby till 9 months are complete, yes or no, है ना. And that time is not very easy, but the moment you hold the child in your hands, आप वो सब कुछ भूल जाते हो. That those regular checkups, those regular ultrasounds, erratic health, lot of things which you were not able to do in those 9 months, we forget everything, yes or no. सिमिलरली ये भी ऐसे ही है. अगर आप एक बार अपनी ऑटो इम्यूनिटी पे, अपने गट हेल्थ पे, राइट, अपनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पे काम कर लेते हो तो आप सब भूल जाते हो और आपकी लाइफ इन चैलेंजेस से फ्री हो जाती है. I don't think there is anything better you should invest your time, resource, energy on than taking up this challenge and making sure that you optimize your health right now. So let's see, कुछ स्टडीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, which are very interesting. So before I tell you what this slide is telling you, anybody who can tell me slide में उनको क्या दिख रहा है? कोई भी जो मुझे बता सकता है? Yes, beta cells. हिमालयपुरी काव्या, वेरी नाइस. एनीथिंग एल्स जो आपको इसमें दिख रही हैं? डैमेज सेल्स, ओके. एक्टिव सेल्स, वेरी ब्यूटिफुल. भागिंदर, वेरी वेरी ब्यूटिफुल. यस, डैमेज्ड एंड अनडैमेज्ड बीटा सेल्स. सो आपको पता है मैंने ये कब पढ़ाई करी? सो व्हाट हैपेंड वाज फॉर लास्ट 5 years. So 6 years back, I became a diabetic. Okay, and my all aunts were 100 kgs plus and diabetic and were on bed for many years before they are no more now. I got very scared of diabetes and I reversed my diabetes. I lost weight, I reversed my diabetes. And then what happened? I started doing type 2 diabetes reversal programs. Right? तो फॉर्चुनेटली मेरे लिए क्या हुआ, मेरे कुछ टाइप 2 डायबिटीज प्रोग्राम्स में टाइप 1 डायबिटिक्स के भी लोग आ गए. 37 years old, 18 years old, 14 years old. And when they asked me, can we do it? I said, okay, but this is for type 2. And as I always tell everyone, and कि सबसे ज़्यादा हमें कौन सिखाता है ना, एंड आई एम श्योर आप जिस भी प्रोफेशन में आप ये अग्री करेंगे मेरे साथ, हमें सबसे ज़्यादा हमारा कस्टमर सिखाता है. टीचर्स को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सिखाते है ना. वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो बहुत सवाल पूछते हैं क्लास में, दे फोर्स द टीचर टू स्टडी मोर एंड मोर. एंड डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा उनके पेशेंट सिखाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू विद मी. सो व्हेन दिस टाइप 1 डायबिटिक स्टार्टेड इम्प्रूविंग, आई थॉट लेट मी सी, कोई रिसर्च है, कोई डेटा है ये बताने के लिए कि यार कितने साल तक ये हो जाए तो हम इन पे काम कर सकते हैं, कब तक उम्मीद है ना. एंड while I was doing my research, I found this some very lovely studies. Now this picture, ये क्या बता रही है हमको? ये बता रही है, ऊपर वाली इमेज में नॉन डायबिटिक का आइलेट ऑफ लैंगरहैन है. तो ये जो रेड है ये सब बीटा सेल्स हैं, राइट. वेराज नीचे वाला टाइप 1 डायबिटिक का है. तो आप ये देखोगे कि बीटा सेल्स कम हो गए हैं, डार्क ब्राउन जो है ये बीटा सेल्स है नीचे पर हैं. अगर हम ऑटो इम्यून कंडीशन को यहां रोक दें, अगर ऑटो इम्यूनिटी यहां थम जाए, अगर टॉक्सिसिटी बॉडी से यहां निकल जाए, अगर इस एरिया को हम अच्छे से खाद दे दें, ग्रो करने लगे, क्लीन हो जाए, इन्फेक्शंस ना रहें, तो ये बीटा सेल्स और ग्रो हो जाएंगे. Now after this I became more curious. So when I kept studying further, so I found this. Now on the left side, can you see this bar graph?
अब ये बार ग्राफ क्या बता रहे हैं कि जब आप यंग एज से बढ़ते हो तो देखो बीटा सेल्स कितनी स्पीड पे बढ़ रहे हैं ना, राइट। बट इवन आफ्टर 70 years बीटा सेल्स बढ़ रहे हैं, चाहे कम बढ़ रहे हैं। कैन यू सी इट फ्रेंड्स? ना दिस वॉज वेरी वेरी एम्पावरिंग फॉर मी। मुझे तो इसमें इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वाओ यार, बीटा सेल्स तो जब मर्जी जब जागो तब सवेरा, जिस टाइम कंट्रोल कर लो उसी टाइम बेटर है, राइट। एंड देन व्हाट हैपेंड, I further researched and this is what I saw. What I saw कि जो रेड वाले हैं वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। वी ऑल नो डायबिटीज इज इन्फ्लेमेशन, राइट, है ना, आग लगी हुई है, मैं बार बार बोल रही हूँ। हमको वो इन्फ्लेमेशन कम करनी है, हमको ऑटोइम्यूनिटी कम करनी है ना, एंड हमको शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखने। तो ये जो ग्रीन सेल्स हैं ये बीटा सेल्स हैं, रेड इन्फ्लेमेशन है, राइट, एंड ग्लूकागॉन है ब्लू सेल्स। अब आप देखो ऑल थ्री थिंग्स आर को एग्जिस्टिंग, और अगर हम इन्फ्लेमेशन एंड बीटा सेल्स को सही कर देंगे तो ऑफ कोर्स टाइप 1 डायबिटिक्स विल इंप्रूव ड्रामेटिकली। And finally, you know, when I quit my research and started working was, जब मैंने देखा this is a history of 82-year-old patient. She has been diabetic for more than 65 years now. And अभी भी ये जो आपको red cells दिख रहे हैं ना, these are beta cells. Even now she has some live functioning beta cells. So friends, this was very very empowering, and what I want to show you is in this picture different age groups हैं, you can see different age groups के लोग हैं, बट आप अगर देखोगे ध्यान से सबके शुगर लेवल्स कंट्रोल में है, 78, 82, 65, 100, राइट। एंड दिस इज अ ग्रुप ऑफ टाइप 1 डायबिटिक्स जिन्होंने एक स्टडी भी की गई जिसमें व्हाट दे फाउंड वाज दैट अगर टाइप 1 डायबिटिक्स को मैनेज एक ग्रुप में किया जाता है और वो उनको एक दूसरे से सीखने को मिलता है, वो स्ट्रेस में कम रहते हैं बिकॉज दे सी अदर पीपल ऑल्सो सेलिंग इन देयर बोट, राइट। They saw that the improvement in these patients was much more than अगर इनको 1-to-1 प्रोग्राम में ट्रीट किया जाए तो। Of course, all of them need personal attention, but all of them need a group also. And I think I really want to thank Ayush at this point for creating a program which has both, right? So this both worlds, best of both worlds. So what I want to say is it's time to change our approach towards managing type 1 diabetes. हमको 3 चीजें करनी है, एक चीज से नहीं बनेगी बात। आप शुगर लेवल्स तो मैनेज कर ही रहे हैं, उसके अलावा क्या करना है, हमको सबसे पहले इन्फ्लेमेशन सेट करनी है। मतलब हमको जो एनवायरनमेंट है उसमें जो टॉक्सिन्स हैं, उसमें जो डेफिशिएंसीज हैं न्यूट्रिएंट की, जिससे कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, फर्स्ट वी हैव टू सेट दैट राइट। सेकेंड, हमको ऑटो इम्यूनिटी सेट राइट करनी है। एंड थर्ड, जब ये 2 चीजें सेट राइट हो जाएंगी तो हमको क्या करना है, बीटा सेल्स को रिजनोवेट कराना है। एंड इट कैन हैपन। मैंने तो आपको आई हैव शोन यू सो मच ऑफ रिसर्च विच साइंटिस्ट हैव डन, यू नो, इन very known labs and all. Beta cells can be regenerated, right? And that's a huge good news. बट अब इसके लिए करना क्या क्या, फिक्स द एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स हटा दिए, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ठीक कर दी, बट जब तक लीकी गट नहीं ठीक किया ना तो पूरा एनवायरनमेंट ठीक होगा ना तो ऑटो इम्यूनिटी ठीक होगी, राइट। सो एज आई एक्सप्लेन टू यू, लीकी गट में क्या होता है, ऑल दीज यू नो प्रोडक्ट्स जो कि गट में होने चाहिए, वो जब गट की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है तो ये ब्लड में चले जाते हैं, और जब ये ब्लड में जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कहता है
चोर है, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, तो सारे के सारे इम्यून सिस्टम के सेल्स, हमारे टी सेल्स, बी सेल्स, सब एक्टिवेट हो जाते हैं. एंड व्हाट हैपेंस? ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाती है. तो दिस इज, वी हैव टू सेट दिस राइट टू हील टाइप 1 डायबिटीज. देन व्हाट? We have to kill infections. As I told you in the beginning, viral infections have been found to be a trigger for type 1 diabetics, right? Gut viral infections. So हमको उनको आइडेंटिफाई करना है, और अगर कोई है तो उनको एलिमिनेट करना है, क्योंकि जब तक चूहा आपके घर में है तब तक वो कुछ ना कुछ रोज कुतरेगा. यस और नो? सो आपको उसको पकड़ना है और उसको बाहर निकालना है, तब भी जाके आपके कपड़े सेफ रहेंगे. देन ये कर लिया तो क्या करना है? टॉक्सिक ओवरलोड. एज आई टोल्ड यू, यू नो, हमारी जेनेटिक्स की वजह से एक और भी इश्यू होता है, हम टॉक्सिन्स बहुत बॉडी से निकाल नहीं पाते, है ना. सो लॉट ऑफ पीपल विल से हम भी तो उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम भी वही खाना खा रहे हैं, हमें क्यों नहीं हुआ? सही बात है, आपको ये पूछना चाहिए. आपको इसलिए नहीं हुआ बिकॉज आपकी जीन्स ने वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया. बट इस बच्चे की जीन्स वो टॉक्सिन्स नहीं बाहर निकाल पा रही है, उसको सपोर्ट चाहिए. सो लेट्स गिव दैट सपोर्ट, राइट? इन्फ्लेमेशन, फायर लगी हुई है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, तो हमें इन्फ्लेमेशन ठीक करनी है. अब इन्फ्लेमेशन ठीक करने के बहुत से तरीके हैं, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है ना वर्क करती है, इज एडिंग गुड फैट इन योर डाइट्स. अब आप में से कितने लोग अच्छा फैट अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं? प्लीज गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स. यस रॉबिन, इवन आफ्टर 21 years बीटा सेल्स कैन बी रीजनरेटेड. हमारी बॉडी में जो गजब की पावर है, आप जितना जानोगे उतना प्यार होता जाएगा. When I say good fats, I mean 30, 40, 50% of your diet should be fat. कितने लोग ले रहे हैं? I don't think lot of us are. Second thing which in Indians I've seen is, और जितने भी मैं टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे देखती हूँ, I see उनका ओमेगा 3 बहुत कम आता है. तो we test ओमेगा 3 levels ताकि हमें पता चले. ओमेगा 9 या 6 बहुत ज्यादा आता है. उसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम नहीं होता. द मोमेंट हम ओमेगा 3, 6 और 9 की रेशियो बढ़िया कर लेते हैं, बहुत हद तक इन्फ्लेमेशन सॉर्ट होने लगती है, गट हील होने लगता है. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू दिस. And of course, nutritional balances. You know, a lot of type 1 diabetics either will have diarrhea or will have constipation just because they are deficient in magnesium. What I've also seen with my type 1 diabetic patients is their vitamin D levels are very, very less. And you know what? If one thing you should set right, agar if you have to manage autoimmunity, then it is vitamin D. एंड वाइटामिन की डी की लेवल 30 नहीं होनी चाहिए, कम से कम 50-60 होनी चाहिए. एंड मेरे पास जो टाइप 1 डायबिटिक्स बच्चे आते हैं, कई बार 6-8 ऐसे वाइटामिन डी लेवल्स के साथ आते हैं. एंड यू नो, देयर इज द साइंटिस्ट एंड डॉक्टर कोइम्ब्रा. उनकी वाइफ को ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. Right? He tried everything and things were not working, and then he studied a lot and he realized that vitamin D in high doses can actually work as an immunomodulator और आपके immune system को सही कर सकता है वो. Right? And he gave vitamin D to the tune of 1.5 lakh units every day also to her wife. But miraculously, and miracle से कम नहीं है ये, I think 6 months or so, wife started responding in MS, imagine. So now what happens is, Coimbra protocol is very famous and I am trained in Coimbra protocol, right? We use high dose vitamin D with some other supplements to actually bring your immune system back in order.
आप सोच सकते हो हाउ ब्यूटिफुल दिस इज. Just a simple vitamin with 1-2 more vitamins and it can bring autoimmunity back in order. I work with rheumatoid arthritis patients, I work with IBS patients, I work with all autoimmune disease patients with my Comrise protocol and gut healing and toxic overload nikalna. And I am seeing miracles every day. Anybody who knows their vitamin D level or their child's vitamin D level, please share in the chat box. Your vitamin D levels, please. Anybody else who knows their vitamin D levels and it is 60 plus, 60 to 100? According to your doctor, it is well within the range, but according to autoimmunity, it is not. You know, sometimes this hurts me. मुझे बहुत दुख होता है. विटामिन डी का कोर्स 120 से 300 रुपए महीने का पड़ता है. विटामिन डी कोविड तो छोड़ दो, सारे ऑटोइम्यून कंडीशंस में इट्स द सेम. राजेश, मैटर करती है. एंड हम में से इतने लोगों को पता नहीं है और इतने लोगों का लो है. वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी 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 अनफॉर्चुनेट है ना. पर हाई डोज विटामिन डी लेने के लिए हमको कुछ और सप्लीमेंट्स भी साथ में लेने पड़ते हैं, कुछ टेस्टिंग करवानी पड़ती है. इट्स अ प्रोटोकॉल प्रॉपरली विच कैन ओनली बी डन बाय पीपल हु आर ट्रेन्ड इन कोइम्ब्रास प्रोटोकॉल. बट अमेजिंग 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 रिजल्ट्स. यस, चार्मी सप्लीमेंटेशन में ही देना पड़ता है बिकॉज फूड में उतना विटामिन डी है नहीं और सन में उतना हम जा नहीं पा रहे हैं. एंड टाइप 1 डायबिटिक्स में जनरली जीन्स भी ऐसी होती हैं जो लो विटामिन डी को सपोर्ट करती हैं. So this is a great thing. So let's see the solution. Ayush? Yes, ma'am. Okay, thank you. So I'll just help people understand. So how we can potentially solve the crisis that we are in. अभी तक ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों है, क्या है, वो सब हमने देखा. So let's try and understand how the solution looks like. So solution has to be extremely, extremely comprehensive. So you have to look at a lot of things into totality and togetherness. So the way we have designed the program, it is divided into two very clear components. So one is treatment and the second is how do you implement that treatment. तो ट्रीटमेंट क्या होगा वो completely personalized है. It's deeply personalized. So if anybody is looking for some kind of a solution, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुझे बता दीजिए, I'll do it at my home. Nothing is going to get solved. Any program, any methodology, any treatment, if it promises you, whether it is Ayurvedic or allopathic or whatever pathic it is, or a group program or whatever it is, if it is telling you these 10 things you need to do and you will be on your way, whether it is for type 2 diabetes or type 1 diabetes or whatever it is, without diagnosis, it is never going to work. So the treatment is deeply, deeply personalized. Now, there are a lot of things that you need to implement. So it is going to be a regimen to follow. So for that, we have a bunch of things to ensure that you do it correctly and you do it properly, for which the second part, community engagement, is there. So the entire program is divided into 4 components. So the first component is about fixing your treatment. So what we need to do to fix you is done in a systematic process. The first thing is we send you a questionnaire. एक आपके पास में survey जैसा questionnaire आता है. You can fill on your own. So it has, the entire program is by the way online. So you don't have to worry about, मैंने शुरू में भी बोला था, दोबारा I am repeating myself. You don't have to worry about physically coming somewhere, and none of that is required. We need you to fill in a survey which will give us a wonderful understanding, objective understanding of your history. Some 30, 40 odd questions are there, maybe a little more. So don't get overwhelmed. You will get technical assistance to fill it in.
After that, an assessment is done, and basis that case analysis, some blood work is ordered. आपके घर से वो सैंपल इकट्ठा किया जा सकता है. If you want, you can go for your individual local lab testing as well. Now, basis that, we draw root cause analysis and come up with an action plan. So that action plan, Dr. Preeti will sit down with you and would explain to you in detail what we need to do for your corrections, not for anybody else, nothing generic, for your corrections. What are the anomalies we have found in your body and how the treatment is going to look like. The next 40 days is more about assisting you to implement it correctly. So the entire support team and Dr. Preeti would be available through WhatsApp and phone calls and so on. So the support staff would be there to assist you and to help you execute what you need to do. एक WhatsApp group भी हम लोग बनाते हैं in which all the patient and the support staff etc. would be there to listen to your queries and to answer you within the group. And even otherwise, if there are personal queries and so on, you can reach out to the support staff. No issues. Then we do have realignments. We have one realignment towards the end of second month or the beginning of third month. एक reassessment करते हैं and we realign according to it. And towards the end of the month, we do go for a second reassessment to help you and advise you what you need to do beyond 3 months even. तो 3 महीने का ये एक प्रोग्राम है, उसमें इस तरह से ये चलता है, more or less the structure. Just to, this is the exact same thing, you know, initialization is the first 20 days and the plan of action explained to you, and then realignments and finally the recovery. Meanwhile, throughout the process, you would be there assisted on the WhatsApp group and community, individually and collectively on the group. And the support team, the doctor is available to you as well. Now, to implement, there are 8 sessions that we will be conducting. The first session would be with the doctor herself individually, and then there are 7 sessions. 4 of those sessions would happen weekly in the first month, and then there would be 2 sessions in the second month and 1 session in the third month to assist you, advise you, and take all your queries and to guide you through and throughout. तो ये सारी चीजें रहेंगी and towards the end of third month we might go for a retesting to advise you further आपने क्या करना है if at all the problem is not fully solved. These are the sessions that would be there in month 1 and month 2 and 3 as we discussed. These are the sessions. So this is how the entire thing is planned. Now the cost of the program is 16,000 rupees for these entire 3 months. I'm opening up a small little survey for you guys so that you can help us understand how interested you are. It doesn't really matter if you haven't made up your mind. All of those options are there. So please help us understand your queries, your concerns. Whosoever is interested, please do drop a phone number in the group chat so that we can reach out to you for your queries or your interest, whatever it be. So, so this is applicable, by the way, for the next 2 days. Otherwise, the full program cost is 20,000 bucks. Now, if somebody is not really sure, then you can opt for the first month and first month alone. So that costs you around 8,000 rupees, the bulk of things. So basically, you would understand what the treatment is all about and how it is going to get executed. Real cure would be applicable only within a 3-month period. So some benefits you will be able to observe. So you want to do this, do it like this, you can go ahead and do that as well. But for the next 2 months, the cost of the program would be full program price, which is 12,000 additional for the next 2 months. The program is beginning of 30th of July. So we have enough time to discuss and clarify all our questions and all of that. And all kinds of methodologies are available. The information would be shared with you. What we'll do next is we'll try to take up all the questions. So I'm allowing you to unmute yourself. That option is there. आप लोग अपने आप को unmute करके you can ask the questions directly. Meanwhile, what I'll try and do is we'll try and we have a few phone numbers privately sent to me. If somebody wants to send a number privately, you can double click on Yellow Squash and you can send them for privacy concerns. Otherwise, so Priyanshi, you can join this program. So that is another educational option we have, Priyanshi. So you have access to all the sessions and everything, and you have access to doctor support team to advise you. Cost of that educational part is 7,000 rupees only for 3 months. So that's that. No standard approach is there. So please keep sharing your phone numbers and so on. And you can ask your questions. You can unmute and ask your questions directly, please.
Mr. Ayush, can you hear me? Yes, you are audible, ma'am. Yeah, I just wanted to know, my husband is actually a type 1 diabetic since 16 years. Right. So is type 1 diabetic reversible? Ma'am, that's what the entire webinar was all about. So yes, it is reversible. But I'll allow Dr. Preeti to answer. Yeah, so see, as I showed you in the data in the slides, that if we can correct the cause and the autoimmune part of it, it can really be improved, and lot of patients are able to go off insulin. But this is something I strongly think we must try, because your insulin dose comes down, side effects because of insulin they also reduce, and in a lot of patients they are even able to get off insulin. So if we talk about data, as I understand through Dr. Preeti, is about 40 to 50%, there is a possibility of complete recovery. Excuse me, ma'am. No. Yes, sir. Go Hello. ahead. You have a query? मैडम, सी पेप्टाइड मेरे बच्चे का सी पेप्टाइड लेवल 0.02 mg है अभी. Point Are you hearing, sir? हाँ, I can hear you. So basically क्या है? हाँ, तो Madam, my child's C peptide level is just 0.02 mg per ml. So is it possible to? And अभी वो ये कितने rejoin हो इंसुलिन सकता है? यूनिट्स पर है? Madam, 32 units. 32. And madam. age कितना है? Yeah, and what is the age? 15, madam. 15. 15 years. हाँ. 15. So अब देखो, सी पेप्टाइड से मैं श्योरिटी नहीं बोल सकती हूँ कि इंसुलिन बंद हो जाएगा, बट आई नो ऑफ चिल्ड्रन 15 साल 18 साल जिनके साथ 3 महीने पेरेंट्स ने काम किया एंड दे वेर एबल टू गेट ऑफ इंसुलिन. बट ये मैं बहुत पक्का बोल सकती हूँ कि अगर अभी वो इतने यूनिट्स इंसुलिन ले रहे हैं तो इससे काफी कम जरूर हो जाएंगे उनके इंसुलिन यूनिट्स. Preeti madam, यस. my son's C peptide is 1.2. There's a huge probability, sir. Good evening, Preeti madam. Good evening. Yeah, Ravi, please go ahead. This is Ravi here. Just want to know, it's a generic question. Where I'm type 2 actually, and mine is under control, and I don't have any medicines and nothing actually. Yes, I just see, because over all the world, or if you talk on India, many practitioners or diabetic practitioners are there, and why they are not study and help the community, and because it needs more and more help for the society, because I know that many people even they don't test the fasting insulin also. So why kind of a situation is there in India with the doctor community? It's a general, it comes in my mind. I know, sir. Sir, what happens? No, it is not only in India. Yeah. It is everywhere. I'll tell you why. See, I'm from Amritsar Medical College, 89 batch, right? I was taught that time that diabetes is not reversible. I was not taught about lifestyle or nutrition or exercise, right? अब अवेयरनेस बढ़ रहा है, डॉक्टर्स भी अवेयर हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी पढ़ रहे हैं. अब आपको ज्यादा डॉक्टर्स दिखते होंगे जो इस बारे में बात करते हैं मेरे जैसे, दैन जो आपको आज से 5 साल पहले दिख रहे थे, राइट? सो वी आर कैचिंग अप, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, but in the coming years you will see more and more doctors also supporting you with all this. Just a correction in my statement. Will it be a formal lobby also? No, I should see, this is, science is changing. Our lifestyle have changed in the last 30 years. When I was in college, I never had an AC in my house, right?
I bought the first AC after 6-7 months of my marriage. So lifestyles have changed. Similarly, science is changing, and as science is changing, people are studying, and as people are studying, they will share that information with everybody around, because at the end, all doctors want our population to be healthy. We have to be a very, very healthy country, sir, to be the economic power of the world. I know. That Right? is more important for all actually. Exactly. And to be the economic power of the world, I think one thing which is very, very critical is that, we Indians stay very healthy. And not only economic, and if we are healthy and we are strong, then we can build a good nation. Yes. Yeah. So we need a healthy nation, and we will together create it. And thank you. Thank And you very thank much. you Ma'am, it's for your Nikita. support. Yeah, Nikita, please go ahead. Thank you. Yes. Ma'am, I'm only 18 years old and I'm facing from type 1 diabetes. Ma'am, I think that once I come out of insulin, sir, I'm just asking, sir, is there any probability that insulin may start after few days or after few years? So is there any probability? So Nikita- recurrence of the disease. Yeah. No. So it's not that, Nikita. You lose weight once, right? Yes, ma'am. Please, ma'am, kindly can you say it Yeah. once? When you lose weight once, some people never gain weight, but some people do gain it back. Why? Because they change their lifestyle back. ठीक है? अगर आपके पास जेनेटिक्स है, आपके पास एनवायरमेंट है, अभी हम आपकी आग बुझा देंगे, आपका इम्यून सिस्टम ठीक कर देंगे. Ma'am, Right. my mother is type 2 diabetic. Type 2 and type 1 are very different, right? So what I'm trying to tell you, Nikita, is that you will always have the genes and you will have the environment. So आपको alert तो रहना पड़ेगा, अपने आप को monitor करके रखना पड़ेगा. But आपका जो डैमेज है बीटा सेल्स का, अगर वो रिपेयर होने लग जाता है, राइट, अगर आप एक बार इंसुलिन से ऑफ आ जाते हो, तो आप खुद सोचो कि योर बीटा सेल्स विल स्टार्ट रिकवरिंग, and then I am sure that you will not let your beta cells go dead again. No, ma'am, definitely not. है ना? तो एक बार ही करके देखो, वहां तक पहुंचो, फिर आगे का सवाल करेंगे. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Anjali here, I need to speak. Hi Anjali. Ma'am, my daughter is 6 years old and she's been diagnosed 4 months back, 4.5 months back. She's taking 18 units Okay. now in a day, and she's Okay. she's fine. She's taking normal diet like green vegetable salads, lentils, everything like a normal Hmm. and her these sugar levels are also in control. Sometime it goes up, raised to 200 before dinner. Otherwise, whatever the doctor has set the doses, it's fine. It comes in control after the breakfast, dinner, and lunch, whatever. But I wanted to get it like stop for forever. So, like what you said, the protocol. I don't know the specific word you use. The protocol, the once. Coimbras. Yeah, comrade. So this can really like change her life. I mean, All of this together can really change her life. Her gut health, toxins, Coimbras protocol can really change her life. okay. So whatever is you told the 3 months program, Yes. like that can really like help that child. She's just 6 years old. डेफिनेटली ये दो एज ग्रुप्स बहुत अच्छे होते हैं. जब 7-8 साल से छोटा होता है बच्चा एंड 13-14 से बड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों में उसको समझ नहीं होती या समझ बहुत आ जाती है, तो वो कर लेते हैं. आपको सपोर्ट करते हैं इस प्रोग्राम में. यस सर. हेलो मैम. यस. मैम मेरी बेटी 3.5 ईयर की है. ओके. उसको टाइप 1 डायबिटीज है. ठीक है. कभी मैडम इसकी तो कभी बढ़ जाती है, कभी डाउन भी बहुत हो जाती है. हाँ, तो टाइप 1 डायबिटीज में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें समझने की ये होती है कि ना ये रोलर कोस्टर राइड की तरह रहती है शुगर लेवल्स. कभी बहुत हाई हो जाएंगी, कभी बहुत कम हो जाएंगी. अब इसमें चैलेंज क्या है, जब तक आप ये रोलर कोस्टर राइड को स्टेबलाइज नहीं करोगे,
बच्चे के ऑर्गन्स में जो नुकसान होना है वो बढ़ता जाता है। यस, तो पहला काम आपका ये है कि आप उसको स्टेबलाइज करो, ठीक है मैम। उसके बाद जाके इंसुलिन बंद हो सकती है, कम हो सकती है, उसकी काम बनेगी, ठीक है मैम। है ना। तो थिंक अबाउट इट एंड ट्राई एंड ज्वाइन दिस प्रोग्राम। जो भी हम डाइटरी चेंजेस, एक्सरसाइजेस और बाकी गट हेल्थ और इम्यूनिटी पे काम करेंगे, ठीक है, आपकी शुगर लेवल स्टेबलाइज भी होंगी यस, एंड ऑफ कोर्स ऑटोइम्यूनिटी कम होगा। अभी बच्ची छोटी है तो प्रोबेबली डैमेज उतना नहीं हुआ है एंड वी शुड बी एबल टू हेल्प हर अ लॉट। उसके बीटा सेल्स चेक करने का कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? सो हम कराएंगे, सी पेप्टाइड कराएंगे और फास्टिंग इंसुलिन, पीपी इंसुलिन। So there is a list of tests which we will recommend. Excuse me, ma'am. Yes. If we opt for this program, then you will be giving us the diet chart. Yes. And after 3 months also, we'll be following your diet chart, or you can. So see, I will not be majorly giving you diet chart. I will be giving you do's and don'ts. हम आपको फिश करना सिखाएंगे, आपको फिशिंग करके नहीं देंगे। तो जब आप 3 महीने में हमारे साथ वो डूज एंड डोंट्स फॉलो करोगे ना, तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसा खाना खाना है या बच्चे को कैसा खिलाना है, क्या उसके लिए वर्क करता है, क्या उसके लिए नहीं वर्क करता। सभी लोगों के लिए मैंने जो टेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि सबके लिए सारे टेस्ट करने पड़े, but some of the example of the tests which might be required are shared. हेलो हेलो, हाँ जी, मैं अमित सिंह बात कर रहा हूँ लखनऊ से। हाँ जी मैम, अभी मैं रिसेंटली आई एम डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटिक फ्रॉम द लास्ट 15 years, but I converted to type 1. From last 3 months I'm taking 115 units per day to organize my insulin, but still I am failed to do so. So this program can be. Yes, this program can definitely help you. Okay, Excuse me, ma'am. Yes, hello. Hello. हाँ जी जी। मैम बोले। Ma'am, my kid is type 1 diabetes when he was 2.4. Now he's 8 plus. Okay. He's just started the new insulin Toujeo. His Okay. doctor has recommended. Okay. But his levels are not getting controlled. Please join this program. We have to find the cause. उसका ऑटोइम्यूनिटी पे आपने कोई काम नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। No, never. हाँ, क्योंकि क्या है ना, एक तरफ से बीटा सेल्स मरते जा रहे हैं, दूसरे तरफ से शुगर इंसुलिन बढ़ता जा रहा है, तो एंडलेस सी गेम है। Okay, fine. Now he's on 4 insulins in a day. विच इज ऑल राइट, यू नो। आपको ये भी समझना है कि ऑटोइम्यूनिटी रोकना बहुत क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली टाइप 1 डायबिटीज। अगर आपने ऑटोइम्यूनिटी को रोका नहीं तो देर आर 80 अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस विच कैन हैपन। Earlier it was controlling its HbA1c was 7. Now Right. it's 9. Yes, my point is बिल्कुल, because ऑटोइम्यूनिटी बढ़ गई ना। Might be getting damages also. Exactly. And कल को फिर कोई और आए, थायराइड आए, सीलियक आए, all of that. Let's work on autoimmunity also. Right. Okay. Whatever you are doing is good. Your doctor is doing an excellent job with you. Please let me tell you. वो बहुत important है, because अगर शुगर लेवल्स नहीं कंट्रोल होंगे तो और साइड इफेक्ट्स होंगे। पर if we can work on autoimmunity, toxins, inflammation, environment simultaneously, हम अपने बच्चे को बहुत 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 ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। No, after 3 months we again have to join the program, or what's the No, process? no, no, no. We will check for you. We will teach you everything in 3 months, Okay, fine. and you will know the results. Thank you so much. Thank you. Ma'am, hello ma'am, am I audible to you? Yes. Ma'am, this is Rama, Abhijit's mom. Okay. Actually, he was being diagnosed type 1 just in the month of January. Okay. And right now he is on 40 units of insulin, two different insulins.
Okay. And he has got a sibling, younger sibling. As you said that it needs to be checked for her also. So how can it impact on her also? Because see, none of the family members have got diabetes. So see if this is the what first case happens in the is ना, family. yeah, so what happens is type 1 डायबिटिक्स में जेनेटिक्स का भी रोल होता है. Okay. ठीक है. सो एक तो जेनेटिक टेस्ट आप करवा सकते हो, वो वाली जीन्स अगर आप कराना चाहो तो. अगर नहीं भी कराना चाहो तो आप ना रेगुलर शुगर लेवल जरूर चेक करते रह सकते हो बच्चे का. हाँ, और अगर आप वो भी नहीं करना चाहो तो आप एटलीस्ट उसका वेट मॉनिटर कर सकते हो. जनरली क्या होता है, हम टाइप 1 डायबिटीज में बच्चे का 8, 10, 12 किलो वेट कम हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं. Okay. You can just stay alert with the symptoms also. Okay, sure. As you said just now, I should monitor her glucose levels, like blood glucose levels. So उसका खाने के बाद भी 2 घंटे के बाद अगर मैं चेक करूंगी तो it will be just like 107, 115 or 120. It doesn't go more or it doesn't go less. So she's fine right now. Just be aware. Okay. Fastings also every often, like weekly once, I try to check it out. Check it once in 3 months. Once in 3 months. Yeah, don't trouble her or him too much. No. Actually, he And has to wait, take it, and he is more worried about her also, because as I am, she may also get into it. So he will be always monitoring like every weekly once or twice in such a उसको way. बोलो once in 3 months मॉनिटर करे, उसका प्यास और उसका वेट देखता रहे. अगर उसको बहुत प्यास लग गई सडनली या उसका वेट कम होने लगा तब जरा सोचना पड़ेगा. Excuse me, ma'am. Yes. I am Pratap. Madam, One query that is, do the fruity odor of smell in the mouth. Yes. The fruity odor in the smell. It I am observing the same thing in her mouth at times, not on regular basis, at times. तो आप एक बार ना उसका फास्टिंग इंसुलिन और कीटोन्स भी चेक करवा लो. Ketones or fasting insulins. Okay. Yes. Okay. Thank you. Hi, ma'am. This is Robin here. Hi, Robin. Yeah, I've been type 1 diabetic for past 21 years, but it's such a relief to know that the beta cells can be regenerated. I would like to know more. I've been controlling this. I've been trying keto diet for some time, and it's worked really well. So, are you suggesting any diet plan or anything of that? Yeah. We do suggest a diet plan, generally either low carb or keto. Right, but in addition to that, we also suggest that you should check your nutritional deficiencies. You should work with Coimbra's protocol on your autoimmunity. You should check your toxins. Generally, type 1 diabetics have high levels of mercury or aluminum or cadmium, right? So you must check your toxic metals, and of course you must check your gut health also. If you have any symptoms like constipation, like acidity, any old history of gut infection, all of that can be a trigger. And as I told you, this guy 37 years who had joined my program could actually decrease the insulin levels in 1 month by half. And which was very significant for him. He was so happy, I can't tell you. I would love to know more about this program. And also one more question, aside from diabetic, can we mention, can it be applied for other autoimmune conditions like Parkinson's or rheumatoid arthritis? Yeah, it can. Because my family has a history of that. Right. So, autoimmune conditions generally run in families. And you can also have chances of getting some other autoimmune disorder, in the coming years. Hello. Yeah, hello. Thanks, madam. Yeah. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, actually, I wanted to know about the cost of the program. I want this for one of my friends. She's type 2 diabetic.
and she contacted your Ayush, clinic, but she was told a very high amount. So I thought there is some confusion. I just want, no, want to there is make it no clear. confusion. So what happens is this program I am doing for corporate social responsibility. Any money I earn from this, a huge percentage of that will go to an NGO. And that is the reason. And type 1 diabetes, what better space to do CSR, you know? If you can help children. Yeah, that's right. And Yeah, that sure. is the That's reason right. I was telling Ayush that there is a huge discrepancy. My one consultation and this program cost is same. Hello. Okay. Yeah. So Yes. can you If tell you me are, roughly how much will it cost? no, but if She's you are type 2 diabetic. type 2 diabetic, you can tell her to join this program. If Ayush is taking type 2 diabetics, I will be happy to help her in this budget within this program. Okay, so I will write my question in the group and you can answer me personally if you don't want to mention it right now. No, आयुष will handle it. अगर आयुष agree करता है तो आप type 2 Hello. diabetes भी इसी program में register करवा दो. Ma'am, please share Ma'am, your number in the group chat here, and we'll Sure, just mention type 2 there. So the team will reach out to you and guide you. Thank you, sir. Always happy to help, Ji. Thank you so much, ma'am. You're welcome. Hello. Yeah. Hello, Yes. ma'am. Yes. Ma'am, good evening. Ma'am, is it possible so that you, if I can get any kind of an email or a contact number so that we can have a chat regarding my daughter who is 13 years old and suffering from type 1 diabetes? Sure. So I think you can reach out to Ayush and he will organize it. So I've shared Okay. my personal number as well. So you can have a chit chat with me and I'll direct you. Okay, sure. So can you just give me a number? I couldn't get it from on the screen. 9717 9717 333 333. 655. I couldn't make it. Could you repeat it? 655. 655. That It's is 9717 333 655. That is correct. Thank you, Mr. Ayush. Hello. Thank you. Yeah. Hello. Hello. Am I Look- audible? Yes, you are audible. Yes, Kamal, go ahead. Hello, ma'am. My name is Kamal, and I'm a 16 years old. I'm an type 1 diabetic patient since I was in 5th standard. Right now, I am in 12th standard, and I really want to know how far is it correct to say to avoid dairy products? So in type 1 diabetes, we must avoid dairy products because dairy actually impacts the gut health significantly and it increases your sugar levels. And second food which we strongly recommend in type 1 diabetics to be avoided is gluten. Kamal? Okay. Yeah. But if you still have these questions, Kamal, I would strongly suggest that you join this program because at your age, one thing you must definitely know is what should be your way of eating. Okay. Thanks a lot, ma'am.